Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Welcome to class 3 subject social study. This is your social study book. Today we are going to start a new chapter 6 environment. Chapter number 6 environment. Do you know what is environment? The environment is everything around us, all our surroundings, including the air, soil, water, plants, animals, and everything that is environment. Environment जो हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें एयर, एनिमल्स, वाटर, प्लांट्स, हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसे हम environment कहते हैं, यानी कि माहौल कहते हैं. Students, come to next point, seasons. How many seasons in a year? Yes, there are 4 seasons in a year. First is spring. You can look at the pictures. This is a beautiful pictures. Flowers are blooming, birds are flying, animals are happy. Spring. Spring is the time when the weather becomes warmer, new leaves appear on the trees, and flower blooms everywhere. In spring, the coldness of the winter seasons goes away and the daytime begins to grow. Dear students, spring जो है वो हमारे गर्मियों से पहले आता है. स्प्रिंग में हर दरख्तों के पत्ते, फ्लावर्स, बर्ड्स जो होते हैं खुश हो जाते हैं. फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लूम्स कर रहे होते हैं, दरख्तों के नए नए लीव्स आ रहे होते हैं, उनके ऊपर अपीयर्स हो रहे होते हैं, और सर्दी जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है और हमारी गर्मी शुरू हो रही होती है. तो स्प्रिंग स्टार्ट होता है. स्प्रिंग में हर तरफ खुशी ही खुशी होती है. नाउ कम टू नेक्स्ट सीजन इज समर. Summer is the hottest seasons of the year. Every country has a different times for summer. In Pakistan, summer usually starts in May and ends in September. The hot and humid summer gets a period of rainfall called the monsoon. These rains fall during the month of July and August. Dear students, summer जो है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है. हर मुल्क में समर का सीज़न जो होता है वो डिफरेंट टाइम होता है. पाकिस्तान में समर सीज़न जो है वो मई में स्टार्ट होता है और सितंबर में एंड होता है. इसमें जो है बारिशें भी होती हैं, रेनफॉल भी होती है, और ये ह्यूमिड यानी कि नमीदार हो जाता है सीज़न और गर्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मानसून. स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी विच इज़ द सीज़न? In these seasons, get of rainfalls. This is a humid and hot. Yes, monsoon. This is a monsoon season. Now come to third, autumn. Autumn is a season when leaves turn brown and start to shed. The winds get cooler and the birds start to migrate in autumn. The temperature remains moderate and the night time start to stretch. डियर स्टूडेंट्स, ऑटम में जो है दरख्तों के लीव्स जो हैं वो डार्क ब्राउन होके गिरना शुरू हो जाते हैं और हल्की हल्की जो है वो सर्दी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, और रात के टाइम जो है हमारा टेम्परेचर रिमेन रहता है, यानी कि हल्का सा गर्मी जो है वो हल्की हल्की ख़त्म हो जाती है और सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं. विंटर. फोर्थ सीजन इज विंटर. यू कैन लुक एट द पिक्चर्स. This is a beautiful pictures. Childrens are playing with snow. Yes, winter is the coldest season of the year. Every country experiences winter in different times. In Pakistan, winter in the north is usually colder than the one of south. Northern areas get frequent snowfall. The winter extends from December till February, and sometimes it goes into March. डियर स्टूडेंट्स, विंटर जो है वो कोल्डेस्ट सीज़न है पूरे साल में, यानी कि ये ठंडा मौसम होता है, और हर कंट्री का जो है विंटर सीज़न भी चेंज होता है, जैसे कि गर्मियों का सीज़न चेंज होता है. पाकिस्तान में विंटर सीज़न जो होता है वो नॉर्थ में आमतौर पर ठंडा होता है,
साउथ के मुकाबले में। और नॉर्थर्न एरियाज जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, जैसे कि कश्मीर, गिलगित वगैरह। और विंटर जो होता है वो हमारा दिसंबर से फरवरी तक होता है पाकिस्तान में, ड्यूरेशन इसकी, और कभी कभार ये मार्च तक भी पहुँच जाता है। सो स्टूडेंट्स, how many seasons in a year? There are 4 seasons in a year. Today we have learned about environment and seasons. Now it's your homework. You will read book page number 24 of your SST book. We will meet next class. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.